हेलो एवरीवन ताले आज आम डिस्कसन करवा ओटीईटी रो 2013 रो पेपर 1 रो। तो आम आज गोटे गोटे पर गोटे कम्प्लीटली सबू तो सेट करवा। यहाँ हूँ 2013 रो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो आम आज सबू सेट 2013 ठू आरंभ करी 2013 पाखु आरंभ करके आम 2021 पर्यंत सबू सेट रो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन कवर करवा। ताले जो माने भी चैनल को सब्सक्राइब करना एबे ही सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा इंपोर्टेंट वीडियो रो रेगुलर अपडेट पाई परिबे। ताले आम स्टार्ट करबा आज वीडियो। जो माने ओटीईटी रो पेपर 1 दौरान से वीडियोटी बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। या सहित पेपर 2 स्टूडेंट माने मध्ये एको देखि परिबे काहेना केतेरा क्वेश्चन एमती अछि जोटा कि पेपर 2 एंड पेपर 1 दुई जन को पई इंपोर्टेंट। ताले स्टार्ट करबा। देखंतु एटा सेट ए रो क्वेश्चन। ताले फर्स्ट क्वेश्चन आम राज्य रे केउ संस्था प्राथमिक स्तर पाई पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करे। ताले व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर स्टेट प्रिपेयर द कोर्सेस ऑफ स्टडीज फॉर प्राइमरी लेवल। ताले देखो एठी हमको जो भी ऑप्शन देछि ओपेपा देन टी&सीआरटी एनसीटी ईएलटीआई सब किछि ऑप्शन हमको माने हमर एलिमेंटरी एजुकेशन रिलेटेड। ताले के प्रस्तुत करे ना ऑप्शन बी टीई एंड एससीआरटी टीचर एजुकेशन एंड एससीआरटी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाउछि। शारीरिक अभिवृद्धि माने ग्रोथ को हैला माने फिजिकल ग्रोथ को। ग्रोथ हमें जानिछंती क्वांटिटेटिव फिजिकल ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव जहाँ को हमें मेजर करू केमती देखो जेमती हमर हाइट वेट तो एको हमें कौन है सब फिजिकल ग्रोथ है। तो ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर मन रखियो फिजिकल ग्रोथ हूँ क्वांटिटेटिव। तापर देखो व्यक्ति निजर भूल रु निजे शिखे यह क्यों शिक्षण तत्व उपरे आधारित देखिबा। Individual learns from his own mistake. This statement is based on which learning theory? ताले निज भूल रु निजे शिखे माने कौन ट्रायल एंड एरर ठीक भूल भूल ठीक रु आम ट्राए करी करी भूल रु शिखिबा। तापरे देखो which of the following statement is not true? Growth is a biological process, development is a quantitative process, education is goal oriented, तापरे लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। देखो ग्रोथ बायोलॉजिकल प्रोसेस ठीक अच्छी डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस नो इट इज रॉन्ग कहना डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। तापर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। इवन एंड इनएक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चंस इजीली। ऑल चॉइसेस अपीयर टू बी possessive. Then error free and quick evaluation is possible by computer. Only one of the choice is the correct answer. तो देखो ऑप्शन बी सी डी ठीक अच्छी किंतु ऑप्शन ए जन इन एक्सपीरियंस पर्सन केबे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करि परिबेनी ठीक अछि एटा भूल अछि। तापरे व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर। तो देखो जिते बड़े किसी गोटे डिफिकल्टी एंड डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करिया कथा कहूची से कोटा करे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑप्शन डी होची राइट आंसर। तापरे जिपा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दीजिए both the chronological age and the mental age of a pupil is 7 years. How may be he may be classified into which category? ताले देखो तार chronological age माने सी एटा होची 7 years and mental age is also 7 years ताले से को कैटेगरी रे आसीबो ताले से नॉर्मल इंटेलिजेंस ठीक अछि नॉर्मल इंटेलिजेंस। तापरे which is different from the other three with respect to fine motor movement, dot joining, dictation, handwriting, separation of fruits and vegetables। ताले कोटा से कहूची कि डिफरेंट अच्छी। ताले देखो ये जो तीनटा देला ए सी बी ये तीनटा डिफरेंट सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रू जना पड़ी जाउछे। तापरे देखो एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड व्हाइल राइटिंग इज गिवन इम्पोर्टेंस। दिस इज बेस्ड ऑन व्हिच थ्योरी ऑफ लर्निंग। ताले आम एटा को लर्निंग थ्योरी उपरे बेस करके कहउछंदे एटा होची लर्निंग हमर कंडीशनिंग थ्योरी कंडीशनिंग। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन
Which one of the following is not taken into consideration while preparing the blueprint for a test? ताले blueprint कला बेल को कोटा को देखा जाए टॉपिक को तो कंसीडर करा जाए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को करा जाए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एटा हम फॉर्म FORM फ्रॉम हेनी टीचिंग टाइम नो टीचिंग टाइम को कंसीडर करा जाए नहीं तापरे साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोल साइंस ऑफ माइंड साइंस ऑफ बिहेवियर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस तो साइकोलॉजी हूँ कौन साइंस ऑफ बिहेवियर तापर देखिबा केउटी अभिप्रेरणार एक उपादान नुह व्हिच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ मोटिवेशन प्राइज इंसेंटिव फ्रेज एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिसटा अभिप्रेरणार गोटे माने हमर फैक्टर नुह तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 years कॉल्ड 2 to 6 years होची कोन कंक्रीट ऑपरेशनल सेटा हां एटी प्री चाइल्डहुड ताले 2 to 6 years होची प्री चाइल्डहुड तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउ पद्धति द्वारा मुख्यतः शिक्षक शिक्षार्थी मानकर गोष्ठीगत आचरण अध्ययन करिथांती The teacher studies people's group behavior mainly by which of the following method? ताले को मेथड रे देखो इंटरव्यू क्लास हिस्ट्री एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन ताले ऑब्जर्वेशन मेथड रे करथांते तापर which one does not indicate child's emotion pleasure sorrow curiosity tolerance ताले कोटा तार इमोशन को देखाएने ताले देखो तो टॉलरेंस टारू तार जना पड़िबनी इमोशन तापरे व्हाट टाइप ऑफ गेम इज इट कॉल्ड व्हेन ए चाइल्ड ड्राइव्स प्लीजर बाय वाचिंग अदर्स प्लेइंग इंस्टेड ऑफ प्लेइंग हिमसेल्फ निजे न खेले कि जदि से अन्य माने खेलुतबार देखि कि खुशी पाउची सेटा को हमें कोन कहबा नॉन पार्टिसिपेटरी हैला काइना से निजे पार्टिसिपेट करिनी हैला कोनोसी बौद्धिक केउंटी बौद्धिक विकासर उपादान नुह Which one is not an element of intellectual development? Creativity, thinking, tolerance, imagination. चलो एटा मते बहुत इजी tolerance. तापरे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन Analytic and synthetic abilities of mind is called intelligence. Who propounded this theory? ताल देखो हमको कहिछि कोन एनालिटिक एंड सिंथेटिक माइंड एबिलिटीज ऑफ माइंड एटा कहितले इंटेलिजेंस एटा कहितले कि स्पेयरमैन तापर क्वेश्चन व्हिच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी स्लो रिटार्डेड नॉर्मल गिफ्टेड ताल देखो नॉर्मल मान को एक्सेप्शनल ले केबे भी इंक्लूड करा जाय नहीं Which one of the following is not a merit of use of teaching aids? ताले teaching aid use करिबार कोटा कोटे merit नुह enhancing content knowledge of the teacher, making learning process easier, creating interest of the child for the topic, imparting concrete knowledge related to topic. एटा बहुत important question कहना ए भला question OTET रे मध्य एथर आसीची हैला एथर भी एग्जाम रे आसी पारे ताले कोन हबो एनहांसिंग कंटेंट नॉलेज ऑफ द टीचर एटा गोटे मेरिट नुह कहीं आम ये टीएलएम टा देखिए बुंटाबुटी भाव में स्टूडेंट पाई कौन यूजफुल होची तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड ताले ऑडियो विजुअल एड यूज करिया द्वारा कौन अचीव कर हुए both hearing and eyesight at sharpened the option D होची right answer visual and auditory coordination is established eyesight option B ठीक हबो देखो कौन कहला visual and auditory coordination हमर established हुए तापर 22 नंबर क्वेश्चन which one of the following is not an element of mastery learning रो कोटा कोटे एलिमेंट नुह ग्रुप टीचिंग मास्टरी लर्निंग रो ग्रुप टीचिंग गोटे एलिमेंट नुह ए स्टूडेंट derived immense pleasure by solving a mathematical problem correctly while doing homework and became interested to solve the next problem this is based on which law of learning
ताले एटा समस्त करि परिबे एटा बहुत माने इजी अछि हमर कोन कोन लॉ थिला जानछंती लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ इफेक्ट नरे आसला लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज अंडर दीटा आसुतला लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज ताले एटा कोन हबो ना लॉ ऑफ इफेक्ट तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि which one of the following is measured by continuous and comprehensive evaluation continuous and comprehensive evaluation में कौन स्टेप माने हमर इवैल्यूएट करि परिबा holistic development which test is conducted to estimate the future efficiency and achievement of a student based on his parents present educational behavior achievement ताले तार प्रेजेंट एजुकेशनल अचीवमेंट को देखिके आम जदि तार किसी भी फ्यूचर एफिशिएंसी एस्टाब्लिश करूछंती एटा को टेस्ट कह जाए एटा को आम कही था एप्टीट्यूड टेस्ट जमती आमर सब जॉब पाई आम जो जो एग्जाम गुड़ा दूसरी से सब गोटे गोटे एप्टीट्यूड टेस्ट which of the following is a dimensional teaching aid blackboard display board still picture model ताले कोटा ए डायमेंशनल को पचारुछि ताले देखो एटा हबो मॉडल होची गोटे डायमेंशनल टीचिंग एड तापर क्वेश्चन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द पीपल्स ऑफ प्राइमरी स्कूल मेनली गेन एक्सपीरियंस ताले को मेथड ए प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट माने मोस्टली एक्सपीरियंस गेन करंती ताले देखो कंक्रीट ऑब्जर्वेशन हियरिंग फ्रॉम अदर्स इमिटेशन इमेजिनरी थिंकिंग ताले कंक्रीट ऑब्जर्वेशन ने से माने अन्य मान ठारू अभिज्ञता अर्जन करथांते तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउटी कार्य पद्धति भित्तिक शिक्षणर एक उपादान नुह which of the following is not an element of activity based learning meaningful learning relatively permanent learning very active teacher pleasant learning ताले कोडा हबो देखो ताले एटा हबो very active teacher एटा तार गोटे उपादान नुह तापरे which of the following is not a characteristic of multigrade teaching रो कोटा गोटे कैरेक्टर नुह the teacher teaches in both the classes serially एटा तार गोटे माने कैरेक्टर नुह तापर देखो which is not a component of creative thinking सब बळे divergent thinking केबे भी convergent नुह ताले ऑप्शन बी होची राइट आंसर मन रखतिबो एटा गोटे जिंस इंटेलिजेंस होची convergent thinking and creative thinking is divergent thinking ताले एठी सरी गला 2013 रो क्वेश्चन या पर हमें देखिबा 2014 रो क्वेश्चन ठीक अछि ताले देखिबा 2014 रे कोन रहिछि क्वेश्चन ताले एटा देखो एटा होछि 2014 रो क्वेश्चन तो एबे हमें डिस्कशन करबा 2014 क्वेश्चन को ताले समस्त वीडियो टी को भल भाव में देखुता को भी क्वेश्चन को स्किप करेनि कहीं क्वेश्चन गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे हमें एबे क्वेश्चन को जीवा ताले देखो क्वेश्चन कौन देछि ना फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल एंड एरर मेथड इज मोर यूजफुल ताले कोथि पाई ट्रायल एंड एरर मेथड टा बेसी यूजफुल हुए ताले जदी किछि जिंस को हमें मन रखिया को चाहतबा बा किछि मेमोराइज करिया को चाहतबा ताहले ट्रायल एंड एरर मेथड इज वेरी यूजफुल तापरे एक्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इमिटेशन एक्टिंग आमे जो करंती एटा को टाइप रो इमिटेशन एक्टिंग होची डेलिबरेट इमिटेशन ठीक अछि डेलिबरेट इमिटेशन तापर देखो द चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न मेनली डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न माने गोटे से जो शिक्षण सामर्थ्यटा कहा उपरे निर्भर करे एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेशन एक्सकर्शन मैच्योरेशन ताल देखिबो गोटे चाइल्ड केते मैच्योर्ड सेटा उपरे मेनली डिपेंड करे तापरे व्हाट इज नेसेसरी फॉर मास्टरी लर्निंग वेल ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग रिमूवल ऑफ लर्निंग और डिफिकल्टीज एडेक्वेट टाइम ताल ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी सबुडा इंपोर्टेंट मास्टरी लर्निंग पाए तापर नेक्स्ट देखिबा
हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन देछि केस हिस्ट्री मेथड इज मोर इफेक्टिव टू स्टडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड ताले केस हिस्ट्री मेथड माने कोथिरे बेसी यूजफुल हुए पचारछि ताले देखो केस हिस्ट्री मेथड क्लासरूम बिहेवियरल प्रॉब्लम लर्निंग प्रॉब्लम फैमिली प्रॉब्लम ऑल ऑफ द एबव ताले केस स्टडी मेथड टी सबुटी पई यूजफुल ऑप्शन डी Which one is not a learning method? कोटा गोटे learning method नुह observation, imitation, discovery, training. ताल देखो ऑप्शन डी ट्रेनिंग गोटे लर्निंग मेथड नुह किंतु डिस्कवरी ऑब्जर्वेशन इमिटेशन एटा गोटे लर्निंग मेथड Which one of the following statement is correct? कोटा करेक्ट अच्छे मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन हिज एनवायरनमेंट ओनली एटा भूल अच्छे मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स अपन हेरिडिटी ओनली ए मध्ये भूल अच्छे डिपेंड्स ऑन बोथ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी एटा ठीक अच्छे तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज OTET एटा मध्ये एग्जाम रे पढ़ी थिला ओस्टेट को टाइप रो इवैल्यूएशन ए टाइप रो क्वेश्चन पूर्व पढ़ी छि ओस्टेट को टाइप रो इवैल्यूएशन ताले एटा होची एंट्रेंस कोटे ना तो एटा होची हमरो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जनरली व्हाट इज द इंटेलिजेंट क्वोशिएंट ऑफ स्लो लर्नर मानकर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट केते ताले स्लो लर्नर मानकर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होची बिटवीन 60 to 70 नले बिटवीन 60 to 80 नले 70 हैला तो ये कहीं भी लिखि दबनी लेस देन 60 नो बिटवीन 60 to 80 व्हाट शुड ए टीचर डू फॉर डुअल क्लास टीचिंग पाई टीचर कौन करेंगे तो देखो गिव टैक्स टू बोथ द क्लासेस एंड मेंटेन डिसिप्लिन सेटिंग एट ए सेंट्रल प्लेस नाई से जदि खाली टैक्स देखी बसबे सेटा भी हेनी टीचिंग इन द हायर क्लास एंड एंगेज द मॉनिटर इन द लोअर क्लास नो इट कंप्लीटली रॉन्ग गिव टैक्स इन वन लोअर क्लास पिला माने गोटे काम देबे एंड टीच इन हायर क्लास आफ्टर सम टाइम टीच इन द लोअर क्लास गिविंग सम टैक्स इन द हायर क्लास एटा बेस्ट तापरे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कौन देछि ना which is correct order of concept formation कोटा करेक्ट ऑर्डर देखो ये सब क्वेश्चन टा जे खाली OTET पेपर 1 पाई इंपोर्टेंट सेटा नुह एटा पेपर 2 पाई मध्ये इंपोर्टेंट तो देखो कंसेप्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रथम होचे सेंसेशन देन परसेप्शन देन डिस्क्रिमिनेशन तापरे जनरलाइजेशन ऑप्शन डी तापर क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग कौन लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिसेबल्ड लर्नर्स एटा तो नुहे लर्निंग अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विथ द राइट्स फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ लर्नर ताले ऑप्शन बी होची राइट आंसर तापरे व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ इवैल्यूएशन नो एग्जांपल कोटा एग्जामिनिंग हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आंसर बुक्स एग्जामिनिंग क्लास एग्जामिनेशन आंसर बुक ताले कोटा व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ इवैल्यूएशन कोटा ताले एठी देखो केवल से कौन कहला माने एग्जामिन करूछंती एठी से मार्क कथा कहनी किंबा पोजीशन कथा कहनी हैला तो एठी स्कोर भी किछि जणा पडुनी तने एठी भितरु किछि भी इवैल्यूएशन नुह तापर क्वेश्चन व्हाट इज देयर एट द टॉप ऑफ डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस हैला डेल को अभिज्ञता शंकुर सर्वाग्रे कौन रही है ओरल सिंबल डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कंट्रीब्यूट एक्सपीरियंस तापरे विजुअल सिंबल तो ये फास्ट थाए बट टॉप रे कौन थाए ओरल सिंबल फर्स्ट थाए ओरल सिंबल तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए प्रोजेक्टेड एड ना प्रोजेक्टिव एड किछि पचारि पारे तो ब्लैक बोर्ड फ्लैनेल बोर्ड एपिडोस्कोप मॉडल ताले भितरु कोटा गोटे प्रोजेक्टेड एड ताले एपिडोस्कोपटा गोटे प्रोजेक्टेड एड हैला चाइल्ड इज लाइक ए टेंडर प्लांट हुज व्यू इज दिस ताले एटा कहार व्यू थिला एटा थिला फ्रोबेल कर व्यू फ्रोबेल प्ले वे मेथड फ्रोबेल if the intelligence quotient of an individual is 130 then which of the following statement is correct mental is greater than chronological age mental is equal to chronological age mental is less than chronological age
ताले जदि गोटे चाइल्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चनटा माने आईक्यू वैल्यू 130 ताले सी हूँ कौन गोटे आमर गिफ्टेड बा कैटेगोरी ताले से गोटे ब्लेस्ड चाइल्ड बा गिफ्टेड चाइल्ड देन तार मेंटल एजटा तार क्रोनोलॉजिकल एज बा तार एक्चुअल एज ठारू अधिक। तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन Which method is effective for evaluation of both curricular and co-curricular activities? ताले both curricular and co-curricular रो मेजर हमर evaluation पाई comprehensive evaluation टा effective comprehensive ए क्वेश्चन टा थरो OTET रे पड़ी ची सॉरी OSTET रे पड़ी ची जदि ए क्वेश्चन टा थरो OSTET रे पड़ी ची देन एटा OTET पेपर 2 रे मध्ये आसी पारे both OTET पेपर 1 and पेपर 2 बिला मान को पाई important। Which of the following pairs of psychologist and the animal on which he experiment to discover his learning theories correctly match? कोहलर सिंपांजी ठीक अच्छे कोहलर इनसाइडफुल लर्निंग थ्योरी देते एंड सिंपांजी उपर एक्सपेरिमेंट करते ठीक अच्छे थ्रॉन्डाइक डग तो यहाँ से कहला कि कोटा करेक्टली मैच है थ्रॉन्डाइक डग पावलोव रैट स्किनर कैट ना ये तीन टा देख करेक्ट ना है केवल करेक्ट अच्छी कोहलर सिंपांजी उपरे करथिले। तापरे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड द टीचर एक्स टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन? डाइवर्जेंट थिंकिंग डायग्नोस्टिक कन्वर्जेंट थिंकिंग एक्टिविटी या पूर्व आम डिस्कसन करिसेंती ना क्रिएटिवनेस सब बेले कन्वर्जेंट थिंकिंग उपरे होता है तो सॉरी डाइवर्जेंट थिंकिंग उपरे होता है तो से टीचर एक्स माने को टाइप ऑफ क्वेश्चन पचारिबे डाइवर्जेंट थिंकिंग रो क्वेश्चन पचारिबा उचित एंड जदि इंटेलिजेंट टेस्ट करा को चाहते देन कन्वर्जेंट। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हिच वन इज नॉट रिलेटेड विथ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन? Wait a minute. Which one is not related with learner centered education? ताले learner centered education सहित कोटा related नुह teacher acts as a facilitator of learning teacher learner is at the center of learning process को एटा भी ठीक अछि emphasis given to child's experience ये भी ठीक अछि teacher teaches through question answer method एटा भूल अछि। In our state, elementary education means the education of children in which of the following classes? ताले ए टाइप रो क्वेश्चन हमर आसीबो निश्चित एटा पूरा ओटीटी हमर पेपर 1 पई क्वेश्चन देखो कोटा हमर एलिमेंटरी रे जिवो ना एलिमेंटरी रे आसीबो क्लास 1 टू भी ट्रिपल आई। हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग? कंडीशनिंग थ्योरी किए देथिला देखो कंडीशनिंग थ्योरी रे आसुची हमर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और जदी खाली कंडीशनिंग थ्योरी पचारथिबो देन पावलोव देथिले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड स्किनर देथिले ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तापर क्वेश्चन व्हिच इज नॉट ए रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट? आमे पूरा टेस्ट कंस्ट्रक्शन गोटे क्लास पढ़ी ओस्टेट पाई पूरा इंपोर्टेंट क्लासटा समस्त जातु सेटा थोड़े देखिए। सेंटेंस कंप्लीशन एटा तो रिकॉग्निशन टाइप नुह ट्रू एंड फॉल्स एटा रिकॉग्निशन टाइप मैचिंग रिकॉग्निशन टाइप मल्टीपल चॉइस टाइप ताले सेंटेंस फॉर्मेशन नुह। तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को What is called pedagogy? Science of learning, science of educational planning, science of teaching. ताले ऑप्शन सी साइंस ऑफ टीचिंग शिक्षादान संबंधी विज्ञान होची pedagogy. According to Harlock, what is the age range of early childhood? early childhood रो age range पचारुछे ताले देखो 2 ରୁ 6 वर्ष होची early childhood then 6 to 10 years होची later childhood। तापर क्वेश्चन व्हिच मेथड इज फॉलोड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ लर्नर? को मेथडटा लर्नर मानकर बिहेवियर स्टडी करिया पई यूज करा जाय? ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू एक्सपेरिमेंटेशन ऑल ऑफ द एबव। देखो बिहेवियर स्टडी करिया पई ऑब्जर्वेशन भी करा जाय इंटरव्यू भी करा जाय एक्सपेरिमेंटेशन भी करा जाय ताले ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड डिफरेंशिएट्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग? ताले को स्टेज रे से राइट रॉन्ग भूल ठीक भितरे डिफरेंस जानी पारे ताले देखो जेते बेले से अर्ली चाइल्डहुड रे थाए सेते बेले से डिफरेंस जानी पारे मान से स्टेज रो से डिफरेंस जानी पारे
ठीक अच्छे अर्ली चाइल्डहुड रो तापर व्हिच स्टेटमेंट इंडिकेट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को स्टेटमेंटा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को इंडिकेट करूची डेवलपमेंट्स ऑलवेज टेक्स प्लेस एट ए यूनिफॉर्म रेट एटा तो नुहे भूल अच्छे डेवलपमेंट इज ए सोशल सेंटर्ड प्रोसेस डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव नुह सोशल सेंटर्ड भी नुह आम कहीपर सब बेले तो डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ ही ठीक अच्छे तापर हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ताले टू फैक्टर थ्योरी देइछंती स्पीयरमैन एटी स्पेलिंग टिके भूल हो जाइए स्पीयरमैन देइछंती टू फैक्टर थ्योरी ठीक अच्छे ओके तापर ये आमर 2014 सरीगला एबे आमे ताले जिपा 2015 को ठीक अच्छे ताले एटा हला ओटीईटी रो 2015 रो क्वेश्चन सेट ए रो ताले आमे डायरेक्टली जिपा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेपर को ताले देखिबा कौन कौन क्वेश्चन अच्छी मुझे फर्स्ट इरेज करुँची हाँ ठीक अच्छे व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ताले कोटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पाई एप्लीकेबल नुह मोर कंटेंट कैन बी कवर्ड करेक्ट मेजरमेंट इज पॉसिबल क्विक एंड करेक्ट इवैल्यूएशन इज पॉसिबल मेजरिंग मोर देन वन लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज पॉसिबल नहीं ताले कोटा से पचारुची कि एप्लीकेबल नुह ताले ऑप्शन डी एप्लीकेबल नुह तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हिच लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक ताले देखो लॉ ऑफ इफेक्ट कौच ना नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस मान तार इफेक्ट रे which is not a सब लॉ ऑफ लॉ प्रैक्टिस कोटा लॉ प्रैक्टिस रो गोटे सब लॉ नुहे देखो लॉ ऑफ यूज लॉ ऑफ डिसयूज एंड लॉ ऑफ रिसेंसी ये तीनटा होची गोटे गोटे सब लॉ किंतु लॉ ऑफ सेट तार गोटे सब लॉ नुह मन रखिथिबो ए तीनटा लॉ ऑफ यूज लॉ ऑफ डिसयूज लॉ ऑफ रिसेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा which is the proper method of remedial learning home tasks group discussion by the teacher cooperative learning practice suggestion ताले कोटा गोटे रिमेडियल लर्निंग पाई गोटे प्रॉपर मेथड ताले ये टाइप रो क्वेश्चन बहुत भाबिया को पड़ो देखो रिमेडियल मेथड पाई होम टैक्स कले खाली हबनी ग्रुप डिस्कशन बाय द टीचर एटा समह करेक्ट कोऑपरेटिव लर्निंग रे बहुत किछि क्लियर हो जिवो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टर्मैन व्हाट इज द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन नो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट केते मोर देन 140 हैला 140 रु अधिक गिफ्टेड रो व्हिच मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग स्लो लर्नर इंटेलिजेंट टेस्टिंग इंटरव्यू विथ पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन बाय द टीचर अचीवमेंट टेस्ट ताले कोटा यूजफुल नुह स्लो लर्नर को आइडेंटिफाई करने इंटरव्यू विथ पेरेंट्स खाली पेरेंट मान सहित इंटरव्यू कले स्लो लर्नर को आम आइडेंटिफाई करिपरिबा नाही तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एस्पिरेशन प्रेज एनकरेजमेंट प्राइज कोटा गोटे एग्जांपल है एग्जांपल होची ताले कोन माने अभिलाष बा एस्पिरेशन 7 नंबर ऑप्शन ए है एम एंड एस्पिरेशन एटा इंट्रिंसिक व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी डन टू नो इफ ए चाइल्ड इज फिट फॉर एडमिशन इनटू विथ डबल आई ताले एटा को टाइप रो टेस्ट करा जाए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करा जाए तापर क्वेश्चन व्हाट लैंग्वेज शुड द टीचर यूज व्हाइल टीचिंग द शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स सो एज टू मीट देयर लैंग्वेज प्रॉब्लम एटा गोटे वर्ष ओस्टेट रे मध्य पड़ी तेणु ओटीटी ओस्टेट एवं ओटीटी पेपर 1 पेपर 2 भितर को भी क्वेश्चन इंटरचेंज हो पारे एमती किसी पर्टिकुलर नाही जे एटा ओटीटी रे ही पड़िबो कौन कहबे ना बोथ बुक एंड स्पोकन लैंग्वेज तापर जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन which learning method is not activity based basic education method laboratory method playway method question answer method ताले कोटा activity based method नुह देखो question answer method गोटे activity बेस्ट मेथड नुह किंतु एटी जदि आम देखा बेसिक एजुकेशन माने कौन कहला माने बेसिक एजुकेशन माने आम जमी कहते यहाँ पूरा फास्ट एजुकेशन पढ़ाई माने पढ़ी बेसिक एजुकेशन माने जोटा धंदामूलक शिक्षा आमर ब्रेड एंड बटर एम ऑफ एजुकेशन है से भाया
which is not related to motor learning, drawing, imitation, cycling, typewriting. एटा मध्य exact ए क्वेश्चन आम स्टेट पूर्व वर्ष क्वेश्चन ने देखी ताले imitation which is not related to motor, imitation टा नुहे. तापरे why is there 12 class teaching system in elementary school? Want of classrooms making the teacher more active, less number of teachers in proportion to number of classes, maintaining discipline. ताले option C, less number of teachers in proportion to number of classes. स्कूल रे शिक्षक कम अछंती सेति पई डुअल क्लास करा जाय. तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. Natural response to a stimulus can be associated with another stimulus. Which learning theory is related to it? तो जिते स्टिमुलस कथा आसब नेचुरल स्टिमुलस एटा होची कंडीशनिंग थ्योरी. ठीक है, कंडीशनिंग थ्योरी बा कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी. which one of the following is wrong? Development is a lifelong process. ठीक अच्छे, development always takes place uniformly. Individualistic development does not stop at maturation. ताले कोटा कोटा wrong अच्छे पचारुछि ना. Development always takes place uniformly. एटा wrong अच्छी kind of rate of development is not always uniform. आमी जानी छंती एटा. Mental health of the child is influenced by which one? Parents' aspiration, teachers' behavior, peer behavior. एटा option D, all of the above. तापर जिबा next question. Whole and part learning concept is based upon which learning theory? होल एंड पार्ट एटा में बहुत थर डिस्कसन ऑलरेडी करी. होल एंड पार्ट होची इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी. व्हिच वन इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी डेवलप करिया पई कोटा यूजफुल बा हेल्पफुल हुए. ताले राइटिंग डिफरेंट यूज ए पीस ऑफ ब्रिक मन कर एटा देला कि गोटे माने इटार विभिन्न व्यवहार गुड़ा लिखा. राइटिंग ए सेंटेंस इन 10 टाइम्स 10 थर लिखिले आमर क्रिएटिविटी किछि बढ़िबनी. वर्किंग आउट 10 एडिशन प्रॉब्लम ये मध्य नुह 10 गोटी मिश्रण करबा. ताले कोटा हेल्प करिवो देखो एक्चुअली ऑप्शन ए गोटे इटार 10टा व्यवहार लिखा. जने एटा भाबिबो कोठी कोठी इटाटा व्यवहार हेई पारिबो. What is inclusive education? To teach by integrating all subjects, to teach all categories of learner together according to their need. ताले ऑप्शन बी होची राइट आंसर. ए क्वेश्चन टा ऑलरेडी दी थर एबे डिस्कशन करिया भितरे दी थर रिपीट हे सरलानी. तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन ताले तापर क्वेश्चन देखो एटा हमर हला इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी. एटा हमर 18 नंबर सरला. तापर नेक्स्ट जिबा. Which one is a teacher centered teaching learning process? Teacher work as a facilitator of learning. Teacher explains with the help of teaching learning material. Teacher supervises learning activities. Teacher helps the learner to gather experience. ताले कोटा teacher centered बोली पचारुछि. ताले देखो इटा देला टीचर एक्सप्लेन्स विथ द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल. ये टीचर सब एक्सप्लेन करती. ताले एटा टीचर सेंटर्ड. व्हिच वन इज नॉट रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड अपन टीचिंग लर्निंग? कोटा गोटे कॉम्पिटेंसी को बुझो नाही. ताले देखो टीचिंग लर्निंग ऑफ ऑल कॉम्पिटेंसीज इज डन साइमल्टेनियसली. ताले एटा बुझो नाही. तापर इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज द लिस्ट. एटा मध्य ओस्टेट रो पूर्व वर्ष क्वेश्चन ने अछि. कंप्लीशन टाइप, येस नो आंसर टाइप, 4 ऑप्शन टाइप, आंसरिंग ए सिंगल सेंटेंस. पूरा टेस्ट कंस्ट्रक्शन चैप्टर आमे जो डिस्कशन करिसेंदी ओस्टेट टाइम रे सेथिरे पूरा डायरेक्टली ए पर्टिकुलर लाइन टा ही लिखा है जे. ताले देखो 4 ऑप्शन टाइप रे हमर गेस करिवाटा सबटू लिस्ट माने आमे बेसी गेस करि परियानी. तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एट द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड? ये मध्य होस्टेट रो क्वेश्चन देखो केते क्वेश्चन रिपीट होची. प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, समेटिव, फॉर्मेटिव. लास्ट स्टेप रे को टाइप रो क्वेश्चन पचारा जाए. ताले देखो लास्ट स्टेप रे एटा इन ए पीरियड. एटी पीरियड माने गोटे होल पीरियड को बुझाउची. तेनो एटा समेटिव भी हबो, फॉर्मेटिव भी हबो. हला जदी फॉर्मेटिव केते बेले हबो जेते बेले एटी बुझाउथबो माने गोटे क्लास गोटे पर्टिकुलर क्लास पर बुझेबो. बट पीरियड पर सेते बेले फॉर्मेटिव गोटे होल ईयर पर बा गोटे होल कोर्स सरिया पर देन समेटिव. ताले एटा समेटिव भी हेबो एवं डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव भी हेबो.
तापर क्वेश्चन व्हिच वन इज नॉट ए टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन कोटा ऑब्जर्वेशन गोटे टूल नुह पचारुची ताले देखो अचीवमेंट टेस्ट गोटे ऑब्जर्वेशन टूल नुह एटा गोटे टेस्ट माने मोर गोटे टेस्ट करिया पे गोटे व्हिच वन इज नॉट ए फ्री रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन कोटा फ्री रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन नुह हाउ मेनी गैसेस आर रिलीज्ड बाय ए ट्री ड्यूरिंग डे टाइम देन डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ए लीफ कोटा फ्री रेस्पॉन्स टाइप नुह पचारुची राइट द यूजेस ऑफ वाटर एक्सप्लेन हाउ ए पीस ऑफ स्टिक कैन बी यूज ताले देखो बी सी डी तीन टा जाक आम आम निज इच्छा एक्सप्लेन करवा किंतु एठी देला हाउ मेनी गैसेस आर रिलीज ताले केतरा गैस रिलीज करे जोटार आंसर गोटे फिक्स्ड तो यार रेस्पॉन्स टा फ्री नुह तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन देछि व्हिच फैक्टर ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी कोटा एजुकेशनल साइकोलॉजी द्वारा इन्फ्लुएंस होइछि टीचिंग मेथड ए मध्य होछि लर्निंग एक्सपीरियंस ठीक अछि इवैल्यूएशन ताले ऑप्शन डी तापर क्वेश्चन व्हिच वन इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ताले चाइल्ड रो डेवलपमेंट को कोटा इन्फ्लुएंस करूछि चाइल्ड डेवलपमेंट को कोटा इन्फ्लुएंस करूची तो देख टीचर्स बिहेवियर टुवर्ड द चाइल्ड पेरेंट्स बिहेवियर टुवर्ड द चाइल्ड पीयर इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड ताले ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव तापर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड द टीचर डू टू करेक्ट द मिस्टेक कमिटेड बाय द चाइल्ड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ताले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टाइम रे टीचर कौन करवा उचित जदि चाइल्ड रो भूल टाकू करेक्ट करिया पाई पनिश द चाइल्ड ए तो केबे भी नुह करेक्ट द मिस्टेक इनडायरेक्टली एटा भी नुह इनडायरेक्टली कले से जानी परिबनी तार माने तार मिस्टेक कौन करेक्ट द मिस्टेक थ्रू अदर स्टूडेंट्स ए मध्य नुह करेक्ट द मिस्टेक इमिडिएटली इन द क्लास गोटे मिनिट ताले देखो एठी हम जदि चारटा ऑप्शन को देखिबा ताले एठी हमको एप्रोप्रिएटली तो किछि लागुनी देखो करेक्ट द मिस्टेक इनडायरेक्टली एटा टिके टिके ठीक लागुची काहेकि ना ए गोटे ऑप्शन ने तार मिस्टेक टा को टीचर करेक्ट करूछंती अवश्य इनडायरेक्ट वे रे आल्सो करेक्ट तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखो पेडागोजी रे एमती केतरा क्वेश्चन आसीबो जहार आंसर हमको एप्रोप्रिएट लागु नथबो किंतु हमको बहुत भाबी के आंसर करिया पई पड़िबो एट व्हाट स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ द पीपल टेक प्लेस ताले को स्टेज रे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तारो माने डेवलप करे देखो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तारो डेवलप करथाय तापर क्वेश्चन द मेंटल एज ऑफ द 10 years old लर्नर इज 10 years तो व्हाट द क्लास लर्नर बिलोंग चले से देखो तार 10 वर्ष मेंटल एज भी 10 एंड क्रोनोलॉजिकल एज भी 10 एंड मेंटल एज भी 10 देन इज एवरेज इंटेलिजेंस और नॉर्मल इंटेलिजेंस which statement is not applicable for education is a goal directed process ये तो ठीक अच्छे education is a lifelong process ये मध्य ठीक अच्छे education is a behavior modification process ठीक अच्छे education is only a formal process ना एटा भूल अच्छे ताले ऑप्शन डी कहीं ना education both formal and non formal and also informal ठीक अच्छे ताले एठी सरी गला आमर ओटीटी रो 2013 2014 2015 रो क्वेश्चन या पर हमें आउ गोटे वीडियो रे डिस्कशन करबा 16 17 18 एंड 19 21 रो क्वेश्चन ठीक अछि नाले वीडियोटी बहुत लेंदी हे जिवो ताले समस्त वीडियोटी को फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत भल्ला परे देखंतु जहार जोटा जोठी डाउट रह जाउथबो क्वेश्चन इमीडिएटली पचारंतु एवं समस्त चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगमान को सहित शेयर करंतु वीडियोटी को लाइक करंतु ठीक अछि आज रो वीडियो को हम एठी रखिबा पुणी नेक्स्ट क्लास रे किछटा इंपोर्टेंट टॉपिक रे हम डिस्कशन करबा समस्त टेलीग्राम चैनल रो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया हेछि टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु सो दैट आपण इंपोर्टेंट वीडियो नोट्स एंड लिंक हमर कलेक्ट करि परिबे एवं एग्जाम रिलेटेड सब इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मध्य कलेक्ट करि परिबे
OTET एग्जाम किछि दिन हुए तो आमर पोस्टपोन्ड अच्छी पुणी तार एग्जाम डेट आसीज तेणु समस्ते OTET प्रिपेरेसन चलई था और पूर्व वर्षर सब क्वेश्चन गुड़ाक भल भाव प्रैक्टिस करनी पेपर 1 हो कि पेपर 2 हो आम चैनल सबुथर इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होती तेणु समस्ते टिके चैनल जहाँ भी माने OTET रिलेटेड वीडियो अच्छी सबको थरे थरे देखी नियंतु मेनली फोकस करंतु ओडिया इंग्लिश एंड पेडागोजी ऊपर जमी ओडिया इंग्लिश पेडागोजी तीनटांग पेपर को बहुत भल मार्क जमी रखिपारे ता सहित कंटेंट पेपर को नेग्लेक्ट करहबनी जेहेतु OTET क्वालिफाइंग मार्क ओस्टेट ठारू अधिक अच्छी तेणु कंटेंट पेपर को सेतिके फोकस करने पड़ो। ठीक अच्छे आज वीडियो को ये रखिए। थैंक यू।